Hey everyone, welcome back to my channel. In today's vlog, I'm going to cook your favorite pork curry with rich gravy. तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पोर्क को बिना ऑयल का भुनेगा until it turns reddish brown। अब ये पोर्क अच्छे से लाल हो चुका है और पक भी गया है, तो मैं इसे अलग से निकाल देती हूँ ताकि बाकी प्रोसेस आराम से कर सके। जो पोर्क का ऑयल निकला था ना, उसी से ही अब मैं प्याज को भून रही हूँ, क्योंकि इससे जो है टेस्ट और अच्छा आता है, टेस्टी होता है। और प्याज को थोड़ा और भूनने देना है जब तक वो हल्का गोल्डन ना हो जाए। फिर उसके ऊपर पोर्क ऐड करूँगी। तो अब प्याज भी अच्छी तरह से पक चुकी है। अब मैं पोर्क डाल देती हूँ। और मैंने अदरक लहसुन पेस्ट, मिर्च पाउडर और हल्दी भी डाल दिया है। अब पोर्क को मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि फ्लेवर अंदर तक चला जाए। थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब इसे हल्की फ्लेम पे 10 to 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। अभी देखो ग्रेवी का कलर कितना रिच और टेम्पटिंग लग रहा है। गाइस, फाइनली पोर्क बन के रेडी हो चुका है और मैं 2 मंथ्स बाद पोर्क खा रही हूँ। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। और ये देखो बिग छोला।
तो गाइस आज मैं मुकबांग कंप्लीट नहीं कर पाई क्योंकि मैंने से ज़्यादा पी ली थी और नेक्स्ट टाइम आई विल डेफिनेटली फिनिश इट एंड पूरा खा के पूरा ये भी गला जो ई खो रहा है, क्या बोलेगा उसको, पूरा हंस रहा है मेरा गला जो ये खा के। जो चीज़ खुद बनाता है वो टेस्टी लगता है खुद को, तो हाँ टेस्टी लगा है ये, पर मैंने ज़्यादा ये एफसी पी ली थी तो इसका वजह से मैं ख़त्म नहीं कर पाई, पर मैंने कुकुम्बर ख़त्म कर दिया। पर ये भी आधा ख़त्म कर दिया, ज़्यादा वो हो गया पूरा ज़्यादा खा लिया, ज़्यादा खा के पूरा भूख लग। तो गाइस आज के लिए इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।